ओल्ड टाउन का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते चलते हैं। हम इस वक्त सख्त धूप की वजह से वॉकिंग पोजीशन में तो नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से बैठ के मैं आपको वो चीजें दिखा सकता हूँ। शायद शाम के वक्त मौसम थोड़ा ठीक हो तो आप बाहर निकल सकते हैं। इस वक्त सख्त किस्म की गर्मी है और मोस्टली लोग जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते या शहर में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है एनर्जी की या बिजली की, लेकिन हवाना शहर से बाहर इनको प्रॉब्लम है। शहर में बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक रश है और लोग आ जा रहे हैं अपनी काम की वजह से, जरूरतों की वजह से। तो ये लाहौर मार्ज रोड की तरफ से जगह है और इसमें आपको जगह जगह पुरानी बिल्डिंग्स और हेरिटेज नजर आ रहे हैं। क्यूबा ने कोशिश की है अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, संभालने की, लेकिन क्यूबन इकॉनमी शायद इस बात की बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देती और इसलिए क्यूबा में और ऊपर से एम्बार्गो भी है, यूएसए एम्बार्गो, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो क्यूबन सिटीजन है वो सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा है। जगह जगह खूबसूरत गार्डन है। There's a speech in the war for almost 8 hours speaking. So 8 hours, you know what? H. Speaking, and you have to stay because what's the leader? No, you need not. You need not. Mira dos casas. Qué fea se ve La Habana así, chico. Yes. And it's a revolution. Revolution means word. Okay. This is where it was built in the 1920. Okay. Yeah. In the 1928, and was called at the beginning the Civic Main Square, and they make the memorial and the monument to the Cuban national hero Jose Marti. But in 1959, Fidel Castro started to use it for military parades and for connect with the people. He likes to make speeches. He likes to talk with the people, tell his plan about his plan with a new revolution, what promise and what he supposed to do with the country and this new social change. So in that stage, where is the monument, usually he stay around 1, 3, 5 hours sometimes speaking with the people. And what's a different time when the people likes to hear it? Some people say maybe not. Maybe they just wait because was the leader and the president. And they will say Castro was a man who, for he speak, was so easy that the people was staying here hearing his speech. In this place, he say all the social change that will come, and he have the Guinness World Record for make the longest speech, around 8 hours, almost. And in this place, also in the government buildings, we can see around, there's the Che Guevara, the Cuban Argentinian freedom fighter, who came from Mexico in 1957 with Castro in a ship called the Granma for start the revolution, be the doctor when he discovered himself like a freedom fighter. And there's the monument. And this one in the wall, who looks really similar to Fidel Castro, is a Cuban national hero
called Camilo Cienfuegos. He died in the beginning of the revolution in an airplane accident, but he was the boss of the military and he was the second in charge behind Castro. So when this man passed away, his brother Raúl Castro takes his position like the boss of the army. And when Fidel Castro left the power, he gave it to his brother Raúl, who accepted and was the president for a short time, preparing the new elections for this man who is the current president now. So actually, the people have usually stop here for remember those times when was a tradition came here for say hi to the president. Okay. तो व्यूअर्स जैसे कि आपको आपने मार्था से सुना कि ये हमारी गाइड से कि ये जो है ये इसमें एक निशान है उनकी जो 1928 में क्यूबन ने ये कैंप किया था। इसके नीचे ये इसके होसे इनके बहुत मशहूर हीरो हैं उनका बहुत बना हुआ है मुजस्समा बना हुआ है। तो 1961-62 में फेडरल कास्ट्रो ने इसको पब्लिक मीटिंग के लिए मुंतखब कर दिया। तो इस ग्राउंड में वो घंटों अपने चाहने वालों और अपनी कंट्री के लोगों से खिताब किया करते थे और दुनिया भर में उनके जो स्पीचेस थी खिताब थे वो घंटों के हिसाब से लंबे होते थे। ये गवर्नमेंट की कुछ और बिल्डिंग है जहाँ पे इनके हीरोज की तस्वीरें लगी हुई हैं जो पहले फेडरल कास्ट्रो से पहले इस मुल्क के आजादी की जंग लड़ चुके हैं और फिर फेडरल कास्ट्रो आगे और अब उनके बाद उनके भाई इस वक्त इक़्तिदार में हैं। ये इसकी टोटल स्टोरी आपके सामने इस पब्लिक स्क्वायर जो है सेंट्रल स्क्वायर उसकी हमने बयान की है कि यहाँ पे जब तक फेडरल कास्ट्रो जिंदा थे किसी वक्त भी अचानक लोगों को कॉल जाती थी और इकट्ठे हो जाते थे। उन्हें ये क्यूबा की नेशनल लाइब्रेरी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री का ऑफिस है। इस तरह इसके अराउंड डिफरेंट ऑफिस हैं सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट के और ये सारा लोग जो है इसमें ज्यादा करीब जाने की और फोटोग्राफी की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आज के दूसरे किसी हदफ की तरफ। ये अमेरिकन एम्बेसी है जी। ये ओबामा साहब ने आके इसको यहाँ तमीर कराया था। अब ओबामा साहब ने 2017 में इसको that was not Obama में Obama? Yeah, he opened the 2007. 2017. Okay. But he was not president that time. Huh? He was not president. Or president in that time? No, American president. He was American president. That was the last thing he did when he was the president. Okay. Before left the charge. Yeah. Okay. 2017 में ओबामा साहब ने यहाँ पे एम्बेसी दोबारा खोली जो 1962-63 में बंद हो गई थी। Okay. So the National Hotel was built by a Tucson and High American company in 1930, but was famous for being the mafia hotel when the Italo-American mafia in the 1930s was attracting tourists and Hollywood superstars for have people around from America during the Prohibition and from every part of the world, for gambling, playing the casinos in the hotel and the other international casinos, and being close to the most famous superstars. So Al Capone and Meyer Lansky was the boss from all Havana. We have Luca Luciano, Al Capone, books is bound, but Meyer Lansky have the whole control from the drugs and the alcohol during the Prohibition in Cuba. So people like Marlon Brando, Frank Sinatra, Ava Gardner, Errol Frank, they was close to the American mafia too. Those Hollywood superstars, they even have dinner. So with the time, every famous around the world to now, they visit the National Hotel.
is the American symbol and a symbol from the American mafia. Cuba was have his second independence war against Spain in 1895 to 1898. Okay. So in 1898, we have American ship used in front of this monument. Okay. Called the Maine, El Maine. So that ship stayed here close to the port, and in the next morning explode. Okay. So they blame to the Spanish, and they come for represent his country and help to the Cuban independence against Spain. So in that moment started the Hispano-American-Cuban War. When it's that building, where you see there, used to be a tiny fortress for the Spanish. And so there have the confrontation here. And in 1998, Cuba win, but USA support or war, and they come to help. We have all the American Navy around the country. In 1902, they left the country and they make a new republic, new colony from the USA. So Cuba was like new Puerto Rico. So this monument is for all the American victims from the main explosion. Okay. And when the tiny fortress, they built the National in 1930. The most important, This one. This is the National, yes. This is the National Hotel from Cuba, is the most important. So the National was called the Mafia Hotel because the American Mafia. ये होटल म्यूजियम ये 1930 में बनाया गया, स्पेनिश का थे उस वक्त, और ये बनाया गया जनाब यादगार उन शोहदा के लिए या उन फौजियों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस अमेरिका से और स्पेन से आज़ादी के लिए लड़ते रहे. The ship was blow up in 1891? 1898. 1898 में एक अमेरिकन शिप था जो यहाँ पे ब्लो अप हुआ, उसको तबाह हुआ, तो उसका इल्जाम भी इन पे लगा. वो जो आज़ादी के हुर्रियत खान थे, और बहुत ही कत्लोगात के बाद फिर क्यूबा ने अमेरिका से और स्पेनिश से आज़ादी का ऐलान कर दिया. ये थी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो आप इंग्लिश में हमारी गाइड से सुन चुके हैं, और इसको आपने उर्दू व्यूअर्स के लिए मैंने आपको बताया है इसका फोटो का करके. तो ये आपके सामने वो अमेरिकन एम्बेसी की वो आखिरी बिल्डिंग है, वो नजर आ रही है, जो काफी 50-60 साल से 70 साल के बाद दोबारा ओबामा साहब